Hello friends, welcome to Exploring Goals. Friends, if you are new, then do not forget to subscribe and hit bell icon so that you will get all my live and recorded courses. Friends, आजिर ये वीडियो रे आमे पर्टिकुलरली डिस्कस करिबा जोटा ओएसएसटीटी जोटा इनिशियल अपॉइंटेड टीचर रो सिलेबस रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो आउ से कोन आउ तारो डिटेल कोन ए दीटा जिंस को देखिबा तो लेट अस बिगिन कोन देखिबा ताहले theories related to education रो कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फोकस करिबा तो पेडागोजी रो ये इंपोर्टेंट पार्ट जहां ओएसएसटीटी एवं इनिशियल अपॉइंटेड टीचर रो सिलेबस रे रहिछि एवं कार्ल रोजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आसीबो तो लेट अस बिगिन कार्ल रोजर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी बा क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच बा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जहां कहले भी चलिबो सो कार्ल रोजर कर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी बा क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच विषय जानिबा कार्ल रोजर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट 1902 रु 1987 थिला तांकर पीरियड एंड फ्रेंड्स कार्ल रोजर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी रो डिटेल रे देखिबा ह्यूमनिस्ट who proposed person-central counseling. He proposed the same believing that clients would be better helped if they were encouraged to focus on their current subjective understanding. A counselor should be warm, genuine, and understanding in order for the client's condition to improve. So, it is client-centered, person-centered, pupil-centered, human-centered. माने आम निजर ग्रोथ निजर डेवलपमेंट ऊपर फोकस करिबा दिस अप्रोच इज कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड बिकॉज कार्ल रोजर्स वांटेड द फोकस ऑन द पर्सन सब्जेक्टिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड सो पर्सन रो सब्जेक्टिव व्यू ऊपर फोकस करथिले कार्ल रोजर कर एई थ्योरी जहा को ह्यूमनिस्टिक जहा को क्लाइंट सेंटर्ड जहा को पर्सन सेंटर्ड थ्योरी बोली कहा जाउची बा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोली कहा जाउची Non-directive counseling is to listen, support and advise without directing client course of action. तो कहा को client रो course of action बा individual रो बा person रो course of action को हमें mold करिवानी motivate करिवानी कौन से प्रकार प्रभावित करिवानी only सुनिबा support करिबा advice दबा right. The main function of counselor is to create an atmosphere where the client can work out his or her problem. So it is most essential for counselor to establish a rapport with the client. So it is person, individual, human, child, adult, maybe student, जे भी हो हमें ता सहित काउंसलर कौन करिबा जे ताको हेल्प करछन्ती जे एडवाइस करछन्ती जे सपोर्ट करछन्ती जे सुनुछन्ती से ताको सपोर्ट करिवे रैपोर्ट बिल्डिंग सहित गोटे भलो गुड कनेक्शन रहिबो काउंसलर एंड क्लाइंट भितर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा फुल्ली फंक्शनिंग पीपल टेंड टू possess certain traits and characters that help them stay in tune with their own emotions and embrace their need to grow as an individual तो निज को निजे इंडिविजुअली ग्रो करिबा ऊपर ही फोकस करिछि एई experiential learning theory by humanistic learning theory. Some of the key characteristics fully functions person include the fully functioning person ro characteristics kono openness to experience, lack of defensiveness, ability to interpret experience accurately, flexible self concept and ability to change through experience. That is real self and ideal self विषय मध्ये कार्ल रोजर कहितले द रियली एक्चुअली हमें कोन and ideal self माने आमे केमिति हबा को चाहूचे तो या भीतर जो जर्नी टाकू कहूचे आमे एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी माने आम एक्सपीरियंस रु आमे लर्न करूचे द एबिलिटी टू ट्रस्ट वन्स एक्सपीरियंसेस एंड फॉर्म वैल्यू बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस जो एक्सपीरियंस आमे पाइले लाइफ रे ताकू ट्रस्ट करिबा विश्वास करिबा एवं सेथिरु आमे वैल्यू ताहा हमकु वैल्यू दबो कि हमरो कोन सब चेंजेस आसीबा दरकार एज एन individual. Self-initiated learning. The ultimate goal is to encourage children in the possibility of learning so that they carry forth the enthusiasm, self-esteem, initiative to learn in the future. Self-initiated, evaluated by the learner and pervasive effects on learners. तो self-initiated learning कौन निजे निजे एक्सप्लोर करूची निजर वर्ल्ड को निजर गोल को
अल्टीमेट एम को टार्गेट को एक्सप्लोर करूची निजे लर्न करूची सेल्फ इनिशिएटेड निज निज द्वारा स्टार्ट करा जाइथिबा एई प्रक्रिया लर्निंग रो प्रक्रिया रे निजे एक्टिव रोल प्ले करूची डिस्कवरी लर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन where the learner draws on his own experience and prior knowledge तो prior knowledge और निजर जहाँ experience अच्छी previous knowledge जहाँ अच्छी ताकू use करिकी problem को solve करूची discovery learning रे it is a method of instruction through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects जहाँ भी देखु चंदी से माने तांको सामना रे ताकू manipulate करूचंदी ताकू use करूचंदी एवं निजर capacity capabilities को explore करूचंदी wrestling with questions and controversies or performing the perform questions in one activities discovery learning is a technique of inquiry based learning and is considered constructivist based approach to education the constructive education हमें जानी चाहिए constructive education progressive education जहाँ को कहूँ जोठी learner निजे निजर knowledge को construct करूची through different activities through exploring and manipulating objects through learning through doing learning by doing okay जेमती कि pragmatism रे कुआ जाइतला self regulated learning refers to one's ability to understand and control one's learning environment self regulation abilities include goal setting self monitoring self instruction self reinforcement तो निज को मॉनिटर करिबा निज को रेगुलेट करिबा गोल को सेट करिबा एवं से अनुसार काम करिबा निज को निजे रीइंफोर्स करिबा कहिबा जे यस यू कैन डू इट मोटिवेट करिबा सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड इज मोस्ट क्लोजली विथ एजुकेशनल एम broadly speaking it refers to learning that is guided by metacognition metacognition is cognition of cognition thinking about thinking how you think thinking about your way of thinking strategic action nijo action ku kemiti goal oriented kariba and motivation to learn ए सब जिनस सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग रे आसुची ए सब जिनस सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग जहाँ हेल्प करूची गोटे ह्यूमन को निज भितर थिबा फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करिबारे राइट एंड ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन सहित समान जहाँ प्रोग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन जहाँ प्रैग्मेटिज्म को फोकस करे अलाउ करे एनकरेज करे Humanistic approaches to learning are based on the principle of humanism and are found most notable work of Abraham Maslow and Carl Roger. तो अब्राहम मस्लो जो देइथिले हायरार्ची ता सहित कार्ल रोजर कर जो थ्योरी ये कनेक्टेड and both are connected to one another humanistic approach माध्यम रे they center on the learner as individual and consider learning is not just about the intellect but also about educating the whole person. So educating the whole person means all round development harmonious development कथा कहूची taking the person's interest goal enthusiasm into account so that full potential can be achieved. So child भितर थिबा total qualities को explore करिबा रो मौका humanistic approach दिए जोठी मस्लो एंड कार्ल रोजर कहिसंती जे ये इंडिविजुअल सेंटर्ड लर्नर सेंट्रिक एंड इंडिविजुअल को केवल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अनुसार जज करा जाएनी टोटल पर्सन को एजुकेट करिबा एजुकेटिंग द होल पर्सन ट्रेनिंग द होल पर्सन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी इज द मोटो ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जोटा आमे पढ़िथिले अब्राहम मस्लोंकर हायरार्ची रे जोटा कार्ल रोजर्स मध्य सेम जिनस को सपोर्ट करंती सो कार्ल रोजर एंड अब्राहम मस्लोंकर ए जो फिजियोलॉजिकल नीड जहां निहाती दरकार ब्रीदिंग फूड वाटर सेक्स स्लीप ओके homeostasis excretion safety need love belongingness self esteem and that is self actualization अछि जोटा क्लियरली देखा जाउनी त मु आउ थरे ओवर राइटिंग कर दूची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन निजर प्रकृत गुण को बुझिबा निजर क्वालिटीज को जानिबा ये रहउची टॉप रे सो सबटु बेसिक नीड हमर होउची कोन फिजियोलॉजिकल नीड दिस वन इज बेसिक वेरी बेसिक फास्ट रिक्वायरमेंट तापर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सबटु निहाती आवश्यक फिजियोलॉजी देन सेफ्टी देन लव बिलोंगिंगनेस देन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन निजे को निजे बुझिबा एट द टॉप मोरालिटी क्रिएटिविटी स्पोंटानिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग लैक ऑफ प्रिजुडिस एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स ये सब अच्छे टॉप तो यही जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये केवल अब्राहम मस्लो नुह कार्ल रोजर्स कर थ्योरी सहित कनेक्टेड
This approach to learning is student centered कहूଥିଲି, with learners encouraged to take responsibility of their own learning and being intrinsically rather than extrinsically motivated. बाहरु केही प्रभावित करिवा परिवर्ते निजे motivated रहिबा, motivation from within, निज भितरु motivation आसीबा. The primary goal of humanistic education is human well-being, including the primacy of human value, development of human potential, acknowledgement of human dignity. ये सब ऊपर फोकस थिला कार्ल रोजर्स कर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रा. Assumption of humanism कौन? Humanist educators teaching strategy will have 4 philosophical pillars. These pillars will guide the teacher's belief and ultimately how they teach. These 4 pillars are कौन कौन? 4टा पिलर जहा एजुकेटर्स मानंकु लर्नर मानंकर भितरे फुल पोटेंशियल को जागृत करिबारे हेल्पफुल. फ्री विल, we have free choice to do and think what we want. Freedom of thinking, freedom in choice. Okay. Emotions impact learning. We need to be a positive emotional state to achieve our best. तो इमोशन जेहेतु लर्निंग ऊपर प्रभाव पकाए तेणु इमोशन सब बड़े पॉजिटिव रहिबा दरकार. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नॉर्मली इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल डिजायर टू बिकम आवर बेस्ट सेल्फ. आमे सब बेले चेष्टा करिबा हमर बेस्ट वर्जन निजे हबा पाई. सो वी शुड बी द बेस्ट वी, आमे जहा आमे हमर बेस्ट हबा पाई चेष्टा करिबा. ओके. देन इनेट गुडनेस, ह्यूमन्स आर गुड एट द कोर. तो एई जिंस सब ऊपर विश्वास रखे. ये होची 4 पिलर्स, फिलोसॉफिकल पिलर जा ऊपर ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर रो टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस करे. एक्सपीरियंशियल लर्निंग कार्ल रोजर कहले रोजर्स डिस्टिंग्विश 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग. वन इज कॉग्निटिव meaningless, cognitive meaningless and experiential significant. Cognitive माने जोटा ब्रेन सहित रिलेटेड ताकू से कहले meaningless, किंतु एक्सपीरियंस रो जोटा गेन करछे सेटा होची मीनिंगफुल बा सिग्निफिकेंट. द फॉर्मर करेस्पॉन्ड्स टू एकेडमिक नॉलेज सच एज लर्निंग वोकैबुलरी, ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल. लेटर रिफर्स टू अप्लाइड नॉलेज. द कॉग्निटिव रिफर करछी काहा को एकेडमिक नॉलेज को, और एक्सपीरियंशियल रिफर करछी काहा को अप्लाइड नॉलेज को, सच एज लर्निंग अबाउट इंजिन्स इन ऑर्डर टू रिपेयर ए कार. ये एप्लीकेबल सिग्निफिकेंट. तो एक्सपीरियंशियल. The key to distinction of experiential learning address the need and wants of learners. Rogers lists these qualities of experiential learning: personal involvement, self-initiative, evaluated by learner, pervasive effects on learner. तो ये सब जिन जाऊँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग रे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स को फोकस करके एंड करवा आज ए इंपोर्टेंट क्लास को. बट लास्ट रे जहाँ पॉइंट्स अच्छी सब इंपोर्टेंट, तेणु निश्चय केयरफुली सुनिबा एवं कोरिलेट करिवा. रोजर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू पर्सनल चेंज एंड ग्रोथ. रोजर्स फील्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव ए नेचुरल propensities to learn. The role of teacher is to facilitate such learning. So every learner has internal power to learn something, and the teacher should provide such environment, such fertile, conducive and productive, suitable environment for the learner. Setting a positive climate for learning. Okay, ये कारो काम role of teacher कहिछि. According to Carl Roger, the role of teacher is to set a positive climate, clarify the purpose of the learning or learner, organize and making available learning resources, balancing intellectual emotional component of learning, and sharing feelings and thoughts with learners but not dominating. शेयर करिबा आमर फीलिंग्स आमर थॉट्स को विथ लर्नर्स, बट वी शुड नॉट डोमिनेट द लर्नर. सो ये पूरा क्लाइंट सेंट्रिक कहला जते बेले सेते बेले ही क्लाइंट मीन्स हियर लर्नर. तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, तेणु फोकस करिबा पूरा पॉजिटिव क्लाइमेट प्रोवाइड करिबारे टीचर प्रोवाइड करिवे पर्पस ऑफ लर्नर कोथि पई कोन अचीव करबा को चाहू से अनुसार कोन सब तार रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करबा से अनुसार सब रिसोर्सेस को balance दबा इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स को, एंड डोमिनेट करबानी किंतु थॉट आउ फीलिंग्स को शेयर करबा. लास्ट 10 इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय कहबी. अकॉर्डिंग टू रोजर्स, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन students participate completely in the learning process and has control over its nature and direction. It is primarily based upon direct
confirmation with practical, social, personal and research problem, and self-evaluation is the principal method of assessing progress or success. Success को आमे केमती जानिबा, केते दूर आमे गले आ केते बाट जिबार अछि सेटा सेल्फ असेसमेंट द्वारा जानिबा. Rogers also emphasized the importance of learning to learn and openness to change. सब बेले डिफरेंट कंडीशन सहित कोप करके चलिबा एंड चेंज सहित निजको भी चेंज करिबा. Principles. Significant learning takes place when the subject matter is relevant to personal interest of the student. तो केते बेले लर्निंग परफेक्टली हे पारिबो जेते बेले पर्सनल इंटरेस्ट थियो स्टूडेंट रा ता सहित हमें कनेक्ट करि पारुथवा सब्जेक्ट मैटर को. Learning which is threatening to the self, that is new attitude, are more easily assimilated when external threats are at a minimum. External threat minimize kale learning he paribo. So threat को minimize करिबा. Learning proceeds faster when the threat to the self is low. जेते threat कम होबा learning सेते faster होबा. Self initiated learning is the most lasting and pervasive. निज भितरे जो जिनस लर्न करिवा पई इच्छा थाए, जिज्ञासा थाए, इंटरेस्ट थाए, से ऑटोमेटिक इजीली लर्न हे पारे एंड एवर लास्टिंग हे पारे. हां जो 10टा पॉइंट का भी कहउतली नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऊपर बेस करूची कार्ल रोजर्स कर एई थ्योरी. द ह्यूमन बीइंग हैव ए नेचुरल पोटेंशियल फॉर लर्निंग. नंबर 2, significant learning takes place when subject matter is perceived by the student as having relevant to his or own purpose. When the individual has a goal he wishes to achieve and see the material presented to him or relevant to the goal, learning takes place with great rapidity. तो स्पीड रे हबो केते बेले जते बेले आमे जहा रिसोर्स दोउचे से रिसोर्स टा चाइल्ड फील करिवो जे तार गोल अचीव करिवा पई रिसोर्स ताको हेल्पफुल हबो तो ताको इजीली से एक्सेप्ट करिवो एवं आगो को जाई परिवो तार गोल को एक्सेप्ट क्रैक करिवा पई. So learning takes place with great rapidity. Learning which involves a change of self organization in the perception of oneself is threatening and tends to be resisted. Self organized हबा दरकार लर्निंग टा. लर्निंग सेल्फ ऑर्गेनाइज मीन्स निजे ऑर्गेनाइज करि परिबा दरकार, निजे जानि परिबा दरकार जे व्हिच वन इज इंपोर्टेंट. Those learning which are threatening to the self are more easily perceived and assimilated when external threats are minimum. When the threat to the self is low, experience can be perceived and differentiated fashion and learning can proceed. Much significant learning is acquired through doing. करी कि बहुत जिनस करि परिबा जोटा pragmatism सहित आमे कनेक्ट करि परिबा. Learning by doing, John Dewey. Learning is facilitated when students participate responsibly in the learning process. तो learning सेते बेले भलो होई परिबा जेते स्टूडेंट माने को भीतर रेस्पोंसिबिलिटी आसीबो एंड से माने रेस्पोंसिबली पार्टिसिपेट करिवे. नेक्स्ट, self-initiated learning which involves the whole person of the learner feeling as well as intellect is the most lasting and pervasive. सबो important point ही अछि and सबो points important निश्चय फोकस करो. Independence, creativity, self-reliance are all facilitated when self-criticism and self-evaluation are basic and evaluation by others is of secondary importance. Self-reliance, creativity, independence and self criticism, self evaluation ए सब को इंपोर्टेंस निजे 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 जत्ते बेले करूचे हमें सेते बेले बढ़िया से पढुचे. जत्ते बेले अन्य ऊपर डिपेंड करूचे, अन्य द्वारा मोटिवेटेड होचे सेते बेले पढिबा त किंतु सेतिकी डेवलपमेंट हेई परिबनी आज इट विल व्हेन इट कम्स फ्रॉम विदिन. लास्ट वन, द मोस्ट सोशल यूजफुल लर्निंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द लर्निंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. A continuous openness to experience and incorporate into oneself the process of change. So ए जिंस ही मु तमन को कहतली एबे क्वेश्चन किछटा देखिनियो जोटा नॉर्मली आसीबो. Becoming a fully functioning person is the concept put forwarded by, no doubt Carl Rogers is the right answer. सरला fully functioning person, humanistic full development, self actualization जोटा मस्लो करा कार्ल रोजर करा. Question number 2. The techniques in respect of human learning context advocated by Carl Roger were given the caption. कौन caption दिया जाता है technique in respect of human learning context? एटा होची self initiated learning कहते हैं. self initiated learning कहते हैं जोटा learning टा advocated by Carl Roger. Next, the type of counseling process proposed by Carl Roger is. The type of counseling टा को टाइप रहबो non-directive counseling.
डायरेक्शन दिया जीवनी ओनली ऑब्जर्व करवा दूर रे बसिक चुपचाप देखिवा ऑब्जर्व करवा एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहितले नेक्स्ट क्वेश्चन अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड ऑफ द for the client is one of the important characteristic of good counselor. This is the expectation of, no doubt here also Rogers is the right answer. The कहिछि unconditioned positive regard for the client. कौन सी कंडीशन करिवानी and positive response रखिबा positivity hope करिबा ये होछि good counselor रा character. क्लाइंट ऊपर कौन सी प्रकार प्रेशर दबानी बा स्टूडेंट ऊपर फोकस दबानी प्रेशर दबानी फोकस तो दबानी से एंड गुड काउंसलर बा गुड टीचर हे परिबा ये भी कार्ल रोजर कहितले ये चला एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी क्लाइंट सेंटर्ड लर्निंग थ्योरी जहां भी कहि पारा ये होछि कार्ल रोजर कर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा कार्ल रोजर कर थ्योरी लर्निंग थ्योरी यू मेक ए लिविंग by what you get, but you make a life by what you give. So keep giving more than you get. अधिका दियो जते पाउछ ताठू. You make a living by what you get. बंची परिबा लाइफ को एंजॉय करि परिबा जहां हमें पाउछ सेथिरु किंतु लाइफ को मीनिंगफुल करिवा पई केते हमें दउछ आ केते देई पारुचे ताहा डिसाइड करे हम लाइफ केते मीनिंगफुल हे परिबो. थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. चैनल रे अछन वा तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करबा को भूलिबनी. लाइक कमेंट शेयर निश्चय करिबो फ्रेंड्स मानक सहित शेयर निश्चय करिबो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपोर्टेंट वीडियो ऑन कार्ल रोजर्स लर्निंग थ्योरी. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर. जय जगन्नाथ.